Hello, dear students. In today's lecture, we are going to deal with the topic called as blood vessels. As we are right now in the chapter called as life processes, and in this chapter, life processes, we are right now dealing with the topic transportation. In the last lecture, we had discussed about the first component, that was blood, and today now the second component we are dealing with is the blood vessels. Now, before moving forward, what are these blood vessels actually? In the first lecture, as we said, that blood is the fluid through which oxygen, nutrients, gases like oxygen, carbon dioxide, and so many nutrients like glucose, amino acid, fatty acids, and glycerol, and all these enzymes as well as hormones are moving through blood. It is actually that fluidic medium which is called as blood, through which these nutrients and all these materials are transported from one cell to another cell, and that cell may be nearby located, or it might be so far, or maybe from head to toe, whatever. So to move that substances from one part of the body to another, we used a fluidic medium, that was the blood. Now this blood does not flow in the air. It needs a passage through which it can travel, and that passage is provided by blood vessels. Got it? So what are blood vessels? They are the muscular tubes. They are the muscular tubes through which blood is flowing. And what blood is, we already know that it basically comprises of plasma, and formed elements में तीन चीज़ें आ जाएंगी: RBCs, WBCs and platelets, formed elements. You got an idea now? So the blood is flowing through these muscular tubes, and these muscular tubes are called as blood vessels. So the first definition which we are going to discuss over here, what are blood vessels? They are basically elastic. Some of them are elastic, not all of them. So they are basically elastic muscular tubes through which the blood flows. And these blood vessels are basically of three types. Now first thing which we are going to discuss over here is arteries. आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स है, तो पहले मैं आपको यहाँ से इसको एक्सप्लेन कराता हूँ, फिर आप इसके हिसाब से नोट्स फिर देख सकते हो. सो आर्टरीज वो वाली ब्लड वेसल्स होती है जो बॉडी के अंदर जब होती है, दे आर यूजुअली थिक वॉल्ड. आर्टरीज काफ़ी थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स है, और ये बॉडी में यूजुअली गहराई पे होती है, इसलिए हम कहते हैं डीप सीटेड. ठीक है, दे आर थिक वॉल्ड as well as deep seated. Why they need this thick wall? Because suppose heart is giving pressure to the blood. Now to tolerate that pressure, no ordinary blood vessel can be there. Only arteries need to be present at that place when the blood leaves from the heart, because only artery can tolerate such high pressure, because the wall of arteries are quite thick. So blood को फ्लो होने के लिए अंदर जो रास्ता है वो बहुत कम है. लेकिन आप देखिए वॉल की थिकनेस कितनी है, वॉल की थिकनेस कितनी है. तो जब आर्टरी से ब्लड फ्लो होता है, तो इसका जो ये थिक वॉल है ये इलास्टिक है. सो इट गोज़ लाइक दिस, इट जर्क्स, इट टेक्स अ जर्क. सो ब्लड व्हेन इट फ्लोज थ्रू द आर्टरी, इट फ्लोज थ्रू द जर्की मूवमेंट. ठीक है, it puts pressure on the wall of the arteries, and artery is able to bear that pressure because it has thick wall. Okay, so this thick wall of artery enables the artery to dilate. आर्टरी पे जब प्रेशर पड़ता है वॉल पे, तो वो वॉल डायलेट हो जाता है. ठीक है, जैसे ये वॉल डायलेट हो गया इस जगह पे. लेकिन वॉल डायलेट होने की वजह से, और ये वॉल डायलेट क्यों हो पाता है? बिकॉज ये थिक वॉल है. वरना अगर ये थिन वॉल हो जाता, ये ब्लड वेसल जो है ये रप्चर हो जाती, लेकिन इसका ये थिक वॉल इसको रप्चर होने नहीं देता. ठीक है, सो पॉइंट पे आते हैं सीधे. आर्टरीज थिक वॉल ब्लड वेसल्स है, और यूजुअली ये बॉडी के गहराई में होती है, इसलिए हम इनको डीप सीटेड कहते हैं. और आर्टरीज का काम क्या है?
आर्टरीज का काम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना है फ्रॉम हार्ट टू वेरियस बॉडी पार्ट्स. Okay, so blood is leaving from the heart. It need to be transported to those organs which need oxygen, glucose for respiration. That's why this blood will be having very high concentration of oxygen. That's why we say the blood leaving from the heart going towards the body tissues will be oxygenated blood. So arteries carry oxygenated blood. Okay, now इनका जो थिक वॉल है इट एनेबल्स देम टू डायलेट. आर्टरी का वॉल ऐसे डायलेट हो जाता है जब उससे ब्लड फ्लो होता है, और इसका ये डायलेट वॉल तभी इसलिए हो पाता है बिकॉज इसका वॉल थिक है. और अगर इसका वॉल थिन होता तो ये रप्चर हो जाती, बट इट डजेंट. ओके, नेक्स्ट थिंग, आर्टरी में जब ब्लड फ्लो होता है तो ये ब्लड का प्रेशर मेंटेन कैसे रह पाता है हाई, बिकॉज आर्टरी का ल्यूमेन बहुत ही नैरो है. ठीक है, तो जब हम आर्टरी का क्रॉस सेक्शन लेंगे तो हम देखेंगे सिर्फ इतना सा पोर्शन है जिसके थ्रू ब्लड फ्लो हो रहा है, जिसमें मैंने डॉट डाला, और बाकी पोर्शन जो है उसका वॉल है. सो यू कैन सी द आर्टरीज हैव वेरी नैरो ल्यूमेन. बहुत कम जगह होती है आर्टरी के अंदर जिसके थ्रू ब्लड फ्लो हो रहा है. ओके, सो दे हैव अ नैरो ल्यूमेन. दैट्स व्हाई ब्लड ऑलवेज फ्लोज अंडर हाई pressure, and that blood should flow under high pressure because it's coming from the heart. Heart is providing that pressure to that blood. Okay, and the largest artery of our body is aorta. Okay, now as I said, all arteries carry oxygenated blood, but there are some exceptions. Like one exception is there, that's pulmonary artery. इस आर्टरी का काम क्या है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है हार्ट से लेके लंग्स की तरफ. ठीक है, तो जब हार्ट से, लेट अस सपोज यहाँ पे हार्ट है, यहाँ पे लंग है, और यहाँ पे बॉडी के टिश्यूज़ है. सो हार्ट जब ब्लड पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड टूवर्ड्स द लंग्स, सो यहाँ पे कोई अदर ब्लड वेसल नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पे आर्टरी होती है. तो जो आर्टरी खून को लेके जाती है ना हार्ट से लंग की तरफ, उसी वाली आर्टरी का नाम पल्मोनरी आर्टरी है, बिकॉज द टर्म पल्मोनरी रेफर्स टू लंग. So this is the note which you have to remember about arteries. Okay, next, veins के points बिल्कुल इसके opposed है. और यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप, arteries are carrying the blood away from heart towards body parts, whereas vein is bringing the blood back from the body back to the heart. Okay, और arteries के walls thick थे, veins के walls thin होते हैं. Arteries carry blood away from heart, veins bring blood back to the heart. You got my point? Arteries had a narrow lumen, veins have a wide lumen. That's why अगर इसका क्रॉस सेक्शन हम ले वीन का, तो वीन का वॉल बहुत थिन है लेकिन ल्यूमेन काफ़ी वाइड है. तो इसका मतलब इसके थ्रू पे काफ़ी ब्लड को फ्लो होने के लिए जगह है. इसका मतलब ब्लड व्हेन इट विल बी फ्लोइंग थ्रू द वीन, इट विल बी हैविंग वेरी लो प्रेशर. Okay, that's why the blood flowing through the vein is quite slow and steady. But as the blood flow is slow, there are chances of backflow also. ये blood वापस आ सकता है, backflow हो सकता है. इसीलिए veins में, जैसे suppose समझ लो आप ये vein है, इसमें valves लगे हैं, तो जब एक बार blood इस valve को cross करता है, then this valve does not allow the blood to come back. So veins oppose backflow, because they allow the blood only to pass in one direction only. But arteries does not need these valves, because the blood flow under arteries is under very high pressure. तो उस blood को पीछे देखने का मौका ही नहीं मिलेगा. लेकिन vein में blood flow slow है, इसलिए ये back flow हो सकता था. उस back flow को रोकने के लिए यहाँ पे valves लगे होते हैं. So once the blood crosses that valve, then this valve does not allow the blood to come back. Okay, और सारी veins डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन. क्योंकि जब अगर सपोज़ मैंने यहाँ पे जैसे बनाया, हार्ट यहाँ पे बीच में है और ये लंग्स है और ये बॉडी के टिश्यूज़ है. सो व्हेन द बॉडी टिश्यूज़ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हार्ट की तरफ, हार्ट उसको पंप करता है, लंग्स की तरफ भेजता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी. इट इज़ द ओनली आर्टरी विच इज़ एन एक्सेप्शन. एंड दिस deoxygenated blood which was going towards the lungs, it will become oxygenated over there, and then that oxygenated blood will come back to the heart through
because this blood will not be having quite high pressure. That's why over here artery is not required, so here pulmonary vein will work. Okay, so pulmonary vein will bring the blood from lungs towards the heart, then heart will pump the blood and it will go through aorta to the body tissues. Okay, so all veins are carrying deoxygenated blood except this pulmonary vein, which is carrying oxygenated blood from lungs to heart. Okay, from lungs to heart. And the largest artery was aorta, and the largest vein is vena cava. Now you can see this diagram first. This is an artery, red color over here, and this is a vein. So when आर्टरी समझ लो मेन पाइप है जो खून लेके आ रही है हार्ट से, और वेन खून लेके जाती है हार्ट की तरफ. तो जब ये आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के टिश्यू सेल्स तक पहुंचना है, इसलिए मेन पाइप तो वहाँ नहीं जा सकती ना, इसलिए इस मेन पाइप के ब्रांचेस निकलते हैं. इट डिवाइड्स टू फॉर्म सो मैनी ब्रांचेस. दिस स्मॉल ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज आर नोन एज कैपिलरीज. इसी तरह फिर जब ये कैपिलरीज उस टिश्यू के आसपास ब्लड को पहुंचाएंगी, तो वो टिश्यूज़, वो सेल्स उस ब्लड से ऑक्सीजन ग्लूकोज को यूटिलाइज करके बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड. सो अब इन टिश्यूज़ के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड आके इन ब्लड में मिक्स हो जाएगा, तो ये ब्लड अब बन गया ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड, और इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से ऑक्सीजनेट करवाने की ज़रूरत है. और वो कहाँ पे होगा? लंग्स के पास होगा. लेकिन ये खून बॉडी से कलेक्ट करके लंग्स की तरफ भेजना है, इसीलिए दिस ऑल ब्लड विल बी ड्रॉप्ड इनटू अनदर स्मॉल कैपिलरीज, एंड दीज कैपिलरीज आर बिलोंगिंग टू द वीन. That's why to differentiate the capillary of vein as well as of artery, for the capillary of artery we use the word arteriole, and for the capillary of vein we use the word venule. You got my point? Now all these veins are collecting deoxygenated blood and pouring that deoxygenated blood back into the vein, and then this vein will be the vena cava. इसके दो parts होंगे, superior और inferior. Superior vena cava will bring the blood from the upper part of the body. Inferior will bring the blood from the lower part of the body, and both of these vena cavas will put the blood into the pumping organ called as heart. Then this heart will supply that blood towards lungs, where this deoxygenated blood will again become oxygenated. तो अब आपको नहीं लगता यहाँ पे वीन और कैपिलरी के वीन और आर्टरी के बीच में ये जो नेटवर्क आप देख रहे हो ब्लड वेसल्स का, इनको हम कैपिलरीज कहते हैं. सो कैपिलरीज आर वेरी थिन वॉल्ड. इनकी जो थिकनेस होगी वीन कैपिलरीज की, इट्स ओनली 1 सेल थिक. ओके, इट्स ओनली 1 सेल थिक. ये देखिए यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है, एंड द ब्लड फ्लोइंग थ्रू दिस कैपिलरी will easily, most of the materials will easily pass out through these pores over here, because it's only 1 cell thick. यहाँ से बाहर निकल सकता है वो चीज़ें, एक्सेप्ट WBCs और RBCs के बगैर, वो काफ़ी बड़ी होती है, बाकी चीज़ें आसानी से बाहर निकल सकती है. ओके, सो तो आर्टरीज जो है, आर्टरीज ये रही. when they divide to form small branches, they are also capillaries. Then from here vein will be there, they also divide to form small capillaries. Okay, so can't we say this, that capillary is present at the junction of artery and vein? So capillaries are those blood vessels which basically join arteries and veins together, and they are very thin walled and extremely narrow. ओके, इनका डायमीटर आप देख सकते हो 4 to 10 माइक्रोमीटर होता है. और आर्टरी जहाँ पे ख़त्म, और आर्टरी और वीन के टर्मिनल्स पे ये कैपिलरीज पाई जाती है, और इन कैपिलरीज के थ्रू से ब्लड फ्लो विल बी वेरी स्लो, सो दैट देयर विल बी, बिकॉज कैपिलरीज विल बी फ्लोइंग अराउंड टिश्यूज़, so this blood will be containing so many useful substances,
So from blood, those useful substances need to be moved towards the cell. दैट्स वाई एक्सचेंज ऑफ फूड मटेरियल अगर होगा वो आर्टरी या वीन में नहीं होगा, वो इन्हीं कैपिलरीज के ज़रिए होगा. ओके, लेट अस सपोज दिस इज़ अ ब्लड कैपिलरी एंड दिस इज़ अ सेल. सो इफ inside the cell carbon dioxide is higher and oxygen is low, so from blood oxygen will enter inside and carbon dioxide from cell will go into the blood. So exchange of food materials are taking place, exchange of gases are also taking place. If inside the cell concentration of glucose is low but inside the blood there will be at that time high, so glucose will flow from blood to cell. So the exchange of food materials occurs between capillaries and the cells. And capillary of artery is called as arteriole and capillary of vein is called as venule. So overall there are three types of blood vessels. And one more thing I have kept in this lecture, look out the differences between arteries and veins. Arteries carry blood from the heart to different parts of the body. Veins और ये जो ब्लड लेके जा रही है ब्लड होगा ऑक्सीजनेटेड. एंड veins, once the body tissues will utilize that blood, then that blood will become deoxygenated. So veins उसी deoxygenated blood को वापस से लेके आएंगे बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ. आर्टरीज यूजुअली बॉडी की गहराई में होते हैं, दैट्स वाई वी से दे आर यूजुअली डीप सीटेड, बट veins आर सुपरफिशियली लोकेटेड. आर्टरी के वॉल्स थिक होते हैं और मस्क्यूलर होते हैं, लेकिन वीन्स के वॉल्स थिन है और नॉन मस्क्यूलर है. आर्टरीज में ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, दैट्स वाई आर्टरीज डू नॉट रिक्वायर वाल्व्स. वीन्स में ब्लड के बैक फ्लो होने के चांसेस है, इसलिए वीन्स में वाल्व्स होते हैं. आर्टरी में जब ब्लड फ्लो होता है इट पुट्स अ प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ एन आर्टरी एंड दैट मीन्स आर्टरी में ब्लड फ्लो होता है अंडर जर्की मूवमेंट और वो आर्टरी के वॉल पे प्रेशर डालता है. दैट्स वाई व्हेन यू विल कीप योर 2 fingers ऑन योर पल्स यू कैन सी दैट, यू कैन फील दैट जर्क. ओके, लेकिन वीन्स में ब्लड फ्लो काफ़ी स्मूथ होता है और आर्टरी में ब्लड का प्रेशर हाई होगा, वीन्स में ब्लड का प्रेशर काफ़ी लो होगा. सारी आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मनरी आर्टरी and सारी veins carry deoxygenated blood except pulmonary vein. So this was the information about the topic blood vessels. I hope you would have understood it and these notes will be useful for you. Still, if anyone among you wants to have a coaching, online coaching for maths, class 10th or chemistry of biology or physics, so in general I can say maths and science, so he can contact us on this number for online coaching at a reasonable fee per month. So classes will be online through Zoom, so anyone can join. Please contact us through WhatsApp on this number so that you can get benefit from here. The classes will be completely CBSE orientated, but now as the syllabus has become common for CBSE and JK boards, so anyone who is in need to learn maths and science for class 10th and biology for class 12th can contact us on these numbers so that he can take guidance from us and score good marks in the future. Okay, see you in the next lecture.